देयर आर 4 काइंड ऑफ डिमांड। सो मैंने क्या बताया आपको कि 2 तरह के इनपुट होते हैं और 2 इनपुट होते हैं, एक इनपुट होता है डिमांड और दूसरा इनपुट होता है सपोर्ट, राइट। अब ये डिमांड 4 तरीके के होते हैं, बता दिया। अब सपोर्ट भी 4 तरीके के होते हैं। देखिए अब सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट होता है मटेरियल सपोर्ट, जैसे हम लोग सपोर्ट करते हैं ना गवर्नमेंट को, हम टैक्स पे करते हैं, नहीं करते हैं, सब टैक्स पे करता है, राइट। नमक तो सब खरीदता है ना, इनकम टैक्स बहुत कम लोग देते हैं, अदरवाइज टैक्सेस तो सारे लोग देते हैं। आप जो भी सामान खरीदते हैं उसमें टैक्स लगता है, राइट, राइट। सो वी सपोर्ट गवर्नमेंट थ्रू आवर टैक्सेस। देन जो सेकेंड काइंड ऑफ सपोर्ट है, वी follow the law, rules and regulation. So obedience of law, rules and regulation हम फॉलो करते हैं, मतलब हम सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। अगर हम मास्क पहन रहे हैं मतलब हम सरकार को सपोर्ट करते हैं, isn't it? Yes, sir. अगर हम मान लीजिए कोरोना अपने आप को नहीं फैलने देते हैं, मतलब गवर्नमेंट को और बर्डन नहीं बढ़ेगा, यानी कि वी आर सपोर्टिंग, ओके। हाँ, एंड थर्ड सपोर्ट होता है कि हम पार्टिसिपेट करते हैं, हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं, राइट, हम हल पॉलिटिकल एक्टिविटी में करते हैं, ये भी एक तरह का सपोर्ट है, फाइन। और ये चौथा सपोर्ट है कि हम अटेंशन देते हैं गवर्नमेंट के तरफ। मान लीजिए गवर्नमेंट कुछ बोलती है तो हम उसको सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम 2 अक्टूबर को नेशनल हॉलीडे मनाते हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं। जो पॉलिटिकल, जो सिंबॉलिक, जो सेरेमोनियल एक रिस्पेक्ट है, वो हम पॉलिटिकल सिस्टम को देते हैं, राइट। सो दीज आर 4 काइंड ऑफ सपोर्ट, राइट, ओके। There are 2 kind of outputs. The output are policies and decisions. इसमें कोई तरीका नहीं है। Policies are different kind of policies. It may be, welfare policies, right? And decision may be any kind of decision of the government. Fine? Yes, sir. Feedback क्या होता है? Feedback क्या होता है कि feedback एक communication process है। मान लीजिए कि अब ये जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, या इस डिसीजन में अगर कोई डिफेक्ट हो गया या इस एक्शन में कोई डिफेक्ट हो गया, तो हम क्या करते हैं, फिर से फीडबैक आती है। एक एग्जांपल, ब्यूटीफुल एग्जांपल मैं बताता हूँ इंडिया का 42th अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट में हमने क्या किया, 42nd अमेंडमेंट एक इनपुट था, एक डिमांड था जो 42nd अमेंडमेंट ने किया, और ये आउटपुट आया 42nd अमेंडमेंट, और वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम था, तो फिर से ये इनपुट गया और फिर ये 44th अमेंडमेंट होता है, राइट। ये पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच है। कुछ है क्या इसमें? समझ में अच्छे से समझ में आ गया? यस सर। ओके, जब अच्छे से समझ में आ गया तो अब इसी को लैंग्वेज में लिखना है। जब आपको समझ में आ गया तो अभी ये मेरे साथ सर प्रॉब्लम हो रही है। जैसे अभी मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले वैसे वो सब्जेक्ट अलग है, बट फिर भी आई वुड लाइक टू डिस्कस वो इकोनॉमिक्स का। आई वाज राइटिंग अ क्वेश्चन, मुझे सब समझ आ गया, बट इतना लेमन लैंग्वेज में लिखा है ना मैं कि वो मुझे खुद ही लग रहा था कि दिस इज नॉट द एग्जैक्ट लैंग्वेज आई मस्ट बी राइटिंग एग्जाम। तो अभी मेरे साथ ऐसा है कि मुझे कॉन्सेप्ट सब समझ में आ जाता है, चाहे वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट, सब समझ में आ जाता है, लेकिन बस लिखने में थोड़ा सा टेक्निकल टर्म यूज नहीं हो पा रहा। टेक्निकल टर्म, राइट। हां, टाइम रहते है। मैं आपको लिखा देता हूँ इसको शॉर्ट में, और रहेगा ना सर जी, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। और जैसे कि आप जैसे इकोनॉमिक्स का है या कोई भी है, आपको पीपीटी तो मिलता होगा ना, एक बेसिक पीपीटी
जिसमें बेसिक जो वर्ड है वो लिखा रहना चाहिए। हाँ सर, पूरा नोट्स भी देते हैं वो, तो हैंड आउट देते हैं ना, तो वो अच्छी बात है। हाँ, तो प्रॉपर जैसे कि मैंने पॉलिटिकल सिस्टम को बताया, तो आपको बताया कि एक ये अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू, जब डेविड की बात होगी तो ये सेंटेंस जरूर लिखा जाएगा, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू। इसका मतलब आप लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू। तो ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा इतना ज्यादा, राइट। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो सभी सिस्टम है, राइट, वो एक मशीन की तरह काम करता है। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है वो मशीन की तरह करता है, और हर मशीन क्या करता है, कन्वर्ट करता है चीजों को, राइट। तो उसी तरह पॉलिटिकल सिस्टम भी कन्वर्ट करता है, राइट। तो हर जैसे मशीन में इनपुट डलता है और आउटपुट आता है, उसी तरह पॉलिटिकल सिस्टम की बात होती है। हर पॉलिटिकल सिस्टम में भी एक इनपुट होता है और फिर एक आउटपुट होता है, और वो जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इनपुट को कन्वर्ट करता है आउटपुट में। फाइन, ओके। सो मैं लिखा दूं इसको? यस सर। ओके, मच इट। आपने शुरू से लिखना है ना, बिल्कुल शुरू से। आई थिंक हमने ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम है ये यहाँ तक हमने कल लिख दिया था। लिख लिया था आपने? पॉलिटिकल सिस्टम से लिखना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, लिखिए लिखिए। व्हाट इज पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसे करके क्वेश्चन। व्हाट इज पॉलिटिकल सिस्टम? लिखिए। पॉलिटिकल सिस्टम is related to political dimension, right? Related to political dimension of any nation state. The political system has function of authoritative allocation of value. Authoritative allocation of value. It means authority is supreme and responsible to allocate goods and services in the society. Political system is related to political dimension of any nation state. The political system has function of authoritative allocation of value. It means authority is supreme and responsible to allocate goods and services in the society. Done. Done? Okay, very good. Now आप यहाँ पर लिखिए, डेविड स्टन argues that, पैरा चेंज करके लिखिएगा,
देख लीजिए ये डेविड डिस्टन, इसमें पूछा डेविड डिस्टन argues that every political system works like a machine. Every machine functions on the basis of input and output. Similarly, political system is also based on input and output. Done, sir. Done? अब यहाँ पे लिखिए according to David Easton, the political system receives input as demand and support from the environment. According to Easton, the political system receives inputs from as demand and support. Inputs as demand and support. Yes, sir. Clear? Yes. From the environment, and it produces output in the form of policies and decision. Yes, sir. The output flows back into the environment. The output flows back into the environment as through a system of feedback mechanisms, giving rise to demand. Yes, sir. This process continues as an input, output, and feedback. This process continues as an input, output, and feedback. And any political occurrence can be understood through this system method. Done? Yes, sir. ओके अब ये नहीं लिखना आपको, बस ये समझाने के लिए मैंने इतना लिख दिया था कि अगर मैं आपको पीपीटी भी दे दूं तो वो आपको समझ में आ जाए। ये समझ में आ गया ना? इनपुट कोई भी अगर मान लीजिए पॉलिटिकल सिस्टम है तो देयर आर टू काइंड ऑफ इनपुट। हाँ Yes, sir. हाँ, तो आप ये फिगर बना लीजिए, ये वाला फिगर ऊपर में लिख दीजिए इनपुट आउटपुट मॉडल, और ये जो फिगर है ये आप बना लीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं डेविड ईस्टन सिस्टम अप्रोच, और सिस्टम डेविड ईस्टन सिस्टम अप्रोच, ये फिगर बना लीजिए। Done. डन? वेरी गुड, Yes. वेरी गुड। बना लिया ना? कोई दिक्कत, कोई समझने में कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके, अब लिखिए डेविड ईस्टन हैज आइडेंटिफाइड two kind of inputs.
One demand and second is support. Yes, sir. लिख लिया? Okay. Yes. अब यहाँ पे लिखिए 4 kinds of demand. 4 kinds of demand. 1, demand for allocation. 4 kinds of demand. Demand for allocation of goods and services. Yes, sir. बस. सेकेंड, ज्यादा नहीं लिखना, इतना ही लिखना, बस समझाने के लिए क्या था कि हाँ, डिमांड फॉर रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, डिमांड फॉर रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, Yes, sir. थर्ड डिमांड फॉर पार्टिसिपेशन, and fourth, demand for communication and information. समझ में आया? इसको टेबल में भी हम बना सकते, पता है? नहीं, डिमांड एंड सपोर्ट को एक टेबल बना सकते हैं और एक तरफ डिमांड लिख सकते हैं, एक तरफ सपोर्ट लिख सकते हैं. नहीं, 4 kind of सपोर्ट लिख लीजिए. मटेरियल सपोर्ट, दो एग्जाम्पल लिख देते हैं इसमें से. लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए और लिख लीजिए. हाँ, नहीं तो बाद में ऑफ कोर्स भूल जाए आप. ऐसे लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, लिखिए डिमांड फॉर एजुकेशन, डिमांड फॉर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड फॉर रेगुलेशन ऑफ environmental law, demand of participation, right to vote, right to participation, और यहाँ पर लिख लीजिए RTI. आप एग्जाम्पल उसमें भी, एग्जाम में भी लिख सकते हैं, राइट? हाँ, लिख लिया दो एग्जाम्पल. Yes, sir. Done? Yes. Okay. Now लिखिए material support. लिखिए Eastern has identified 4 kinds of support. पहला लिखिए material support. Example, payment of taxes. हम करते हैं ना, गवर्नमेंट अपना पैसा कहाँ से लाती है? हमारे तो पैसे रखती है. हाँ, दूसरा है मटेरियल सपोर्ट हो गया, और लिखिए ओबीडियंस ऑफ लॉ, obedience to law, rules and regulation. तीसरा participatory support. For example, voting, right? Contesting election. And fourth is paying attention to the government. Attention to the government communication.
and respecting them. होता है ना, सरकार जब भी कुछ बोलती है तुरंत लोग ध्यान देते हैं कि आप 1 मई से वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्री करवा दीजिए। लोगों ने रजिस्ट्री करवाना शुरू कर दिया। इट इज अ सपोर्ट। यस सर। यस, आपने कराया रजिस्ट्रेशन? अभी सर फैमिली में कराना शुरू कर दिया है, मतलब अभी एक ही मिला, लेकिन अभी मैंने नहीं कराया, मैं नहीं कराऊंगी। अच्छा अच्छा यार, ये तो बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ का। ये आधार पुना वाला हम लोग कितना बोल रहे थे, हमारी नजर लग गई, वो भाग गया बेचारा। और सर वो बयान आ रहा था, ही वाज सेइंग ऐसा, मैंने पता नहीं, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग वो क्या बयान दे रहा था। डेली अपने डिफेंस बयान आ रहा था उसका, डेली। अल्टीमेटली वो भाग गया। यस, वो भाग गया। हम लोग कितना बात कर रहे थे आधार पुना वाला, वो भाग गया। No, I was thinking he had lots of support, but when he flew from India, I realized that he was in very, बहुत ही टेंशन में काम कर रहा था बेचारा। कंडीशन हो गई थी। हाँ सर, बहुत कंडीशन पर्सनली उसके लिए खराब हो गई थी, और वो तभी इतना अपना बोल रहा था, डेली सर बोल रहा था अपना डिफेंस में वो। हाँ, कि फोन कर रहे थे उनको, पता नहीं सरकार से कोई बहुत ही पावरफुल लोग फोन कर रहे थे। अब ये पावरफुल लोग कौन है पता नहीं। चलिए। अभी सर आई एम थिंकिंग कि उससे तो फीवर वगैरह तो आएगा ही, जैसे वो वैक्सीन अगर लगाएंगे तो मोस्टली हो रहा है, फीवर आ रहा है तो अभी तो। अच्छा, मैंने अपने मदर के वैक्सीनेशन कराया, उनको तो नहीं आया। अच्छा सर, अभी मेरे यहाँ पे मेरे अंकल है और मेरे पापा जी, उन्होंने कराया है तो उनको दोनों को आया था। थोड़ा सा तो वो डाउन हो ही जाता है, मतलब हाँ, मतलब कोई भी वैक्सीनेशन का वो होता है। अब मान लीजिए वो भी जो डाल रहे वैक्सीनेशन डाल रहे, वो भी तो कोई वायरस से ही डाल रहे ना, दैट इज एंटीवायरस, राइट। सो वो कोई नया वायरस जा रहा है आपको बॉडी में, और आपके बॉडी ना उसको डाइजेस्ट कर रहा है, आपको पचा रहा है कि है ये कौन आ गया मेरे घर में, राइट। सो इसीलिए थोड़ा फीवर, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो जाता है। नहीं, वो तो सर आई अंडरस्टैंड, व्हाट आई एम सेइंग इज कि उससे 2-3 दिन जो है वो खराब हो जाएंगे। तो नहीं, इवन आई डोंट गो फॉर वैक्सीनेशन, मतलब मैंने कराया भी नहीं है। और हंगामा ऐसे ही हो रहा है कि वैक्सीनेशन नहीं है, राइट। पता चले कि एक डोज पड़ गया और दूसरे डोज के लिए हम घूम रहे हैं, मिला ही नहीं। तब ज्यादा नुकसान हो जाएगा सर। तब ज्यादा नुकसान हो जाएगा, पता चला आधे में फंस गए, ना घर का ना घाट का, राइट। यस सर। हाँ, चलिए आगे लिखिए। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आउटपुट। लिखिए, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आउटपुट। देखिए, पहला पॉलिसीज एंड थोड़ा दूसरा डिसीजन। फीडबैक लिखिए। Feedback is a communication process in which media play a vital role to spread the people-oriented policy or anti-people policy taken by the political system. Done? हाँ, इतना ही लिखना है और आगे नहीं लिखना है, बस यही लाइन बस लिखना है। चलिए, हो गया, डन। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक कैसे मिलता है? मीडिया के थ्रू मिलता है ना। हाँ, तो फीडबैक इज ए कम्युनिकेशन प्रोसेस, राइट, फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द पॉलिटिकल सिस्टम, राइट। वो सोसाइटी नहीं बोलते, वो एनवायरनमेंट बोलते हैं।
फ्रॉम सोसाइटी टू जो गवर्नमेंट को मिलता है, यही फीडबैक है, और इन दैट मीडिया प्ले अ वाइटल रोल. ओके. Yes, sir. Okay. Now come to the critical evaluation. What is the critique of this? देखिए, critical evaluation. Yes, sir. अब पहला critique लिखिए. The system approach has brought unnecessary complications and jargons. The system approach has brought unnecessary complications and jargons. Yes, sir. दूसरा लिखिए, the system approach is preoccupied with stability, maintenance, persistence, and equilibrium. System approach is preoccupied with stability, maintenance, persistence, and equilibrium. Yes, sir. A tendency derived from biology which cannot be applicable to a political system. Applicable to क्या था? Sorry? Applicable. Okay, sir. Done, sir. Done. That could not be applicable to political system. इसी में थर्ड लिखिए. Yes, sir. इसी में लिखिए. It is based on Europe-US model. It is based on Europe-US model. Done, sir. Done. Now come to the Marxist critique. What Marxist says about it. देखिए, Marxist critique. Yes, देखिए, sir. the Marxists were critical of the behavioral science developed in the USA. Marxists were critical of behavioral science developed in the USA. Why they are critical? देखिए, because behavioral approach developed in the midst of Cold War by the American political scientists. Yes, sir. Behavioral approach developed in the midst of Cold War by the American political scientists. They targeted to understand and explain the social reality of the socialist countries. They targeted to understand and explain the social reality of socialist countries. Yes, sir. For example, elite Yes, theory of democracy. Elite theory of democracy yes, sir. which says that it is an elite theory of democracy, which says that it is an elite which enjoy the power in any organization.
whether it is capitalist or socialist. Whether it is Capitalist or socialist. okay. Elite theory of democracy says that it is an elite which enjoy the power in any organization, whether it is capitalist or socialist. Done. So Marxists looked at behavior theory as a conspiracy against socialist countries. Done? Yes, sir. Okay. Now, the Marxists argued that the system approach is a status quoist. It is not a universal approach applicable to every country. It is highly based on Western countries where system is fully developed. Done. Western countries Where system is fully developed. done, sir. समझ में आया पूरा? Yes, sir. It gives you new tools to understand politics. This is the approach, right? So through this approach you can see any country, right? You may criticize it, that's fine. There is a criticism, and the criticism हर के साथ में होता है, right? But it gives you approach. Yes, how political system functions, isn't it? So there are input, then there are conversion in the system, then output. Right. थोड़ा सा वाला बिहेवियर वाला बता दीजिए. बिहेवियरल साइंस, बिहेवियर थ्योरी. Sorry, behavioral. ये ना सबसे पहली लाइन में लिखा बिहेवियरल साइंस एंड बिहेवियर से. कल नहीं बताया था behavioral science, behavioral movement, behavioralism. कल नहीं बताया था. सोशल साइंस को कैसे साइंस बनाना चाहते थे. ओके 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 कि उसमें हम फैक्ट. ओके या फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, यस, डेटा, वेरिफिकेशन, प्रेडिक्शन बताया था कल ना. डन सर. वही बिहेवियरल साइंस है, वही बिहेवियरलिज्म है. यस सर. नाउ सो यू गॉट द आइडिया. यस सर. Any confusion? No. Okay. Now the second is a structural functional approach. Not in that. A structural functional approach. ये सेकंड अप्रोच हो गई, मतलब अभी हम second approach. मतलब जी. अच्छा सर, मैं देखिए हमें इतना अप्रोच पढ़ना है, ऊपर 8-9 अप्रोच पढ़ने हैं टोटल. हमने ये जो लिस्ट लिखी थी यहाँ पे. हाँ, ये बताया था मैंने. सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अप्रोच एंड पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच. राइट. सो आप तैयार है तो मैं यहाँ तक पढ़ाने के लिए आज तैयार हूँ. यस सर. ठीक है. हाँ. यस सर. कुछ नहीं है, सब समझना है, बस लिखना है, और कुछ है नहीं इसमें. राइट. और क्या है कि ना आप इसको जल्दी भूलेंगे, तो इसको बार बार. एक होता है ना जब हम हलवा खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, तो हम जल्दी भूख लग जाती है ना. हाँ, तो उसको आप जल्दी भूलेंगे, तो आप उसको जल्दी जितनी बार पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा.
Right? Sir, just 1 minute का break लेगा. I'm just coming to Sure. work. Okay. Go ahead. Yes, आ गए? yes. ओके, अभी बता. मैं कोई फिगर बता रहा था, बना के बाद में बना देता. चलिए. हाँ, पॉलिटिकल सिस्टम, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो अप्रोच है वो डेवलप किया गया था. पहले लिख लीजिए, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच लिख करके आप डैश दीजिए. आपका थीम है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच. Yes, sir. लिखिए. दिस अप्रोच, लिख लीजिए, दिस अप्रोच was developed by देखिए, Grabel A. Almond and James S. Coleman. Developed by Grabel A. Almond and James C. Coleman. Done, sir. Right? In their book, The Politics of Developing Area. The Politics of the Developing Area. Yes, sir. लिख लीजिए. लिख लिया? This is book. In their book, this approach was developed by Grabel A. Almond and James C. Coleman. But in their book, The Politics of the Developing Area.
areas. Done, sir. Right? It was developed to remove the deficiency occurred in the political system, approach. Right? Yes, sir. It was developed to remove deficiency occurred in the political system approach. ये एक पैरा लिख लिया इतना. Yes, sir. लिखिए. Before Almond and Coleman, लिखिए. Before Almond and Coleman, this approach was used in social anthropology. Before Almond and Coleman, this approach was used in social anthropology by Radcliffe Brown and B. Malinowski. Before Almond and Coleman, this model was used in social anthropology by Radcliffe Brown and B. Malinowski, followed in sociology by Talcott Person, Robert Morton, and Marion Levy. Before Almond and Coleman, this model was used in social anthropology by Radcliffe Brown and B. Malinowski, followed in sociology by Talcott Persons, Robert Morton, and Marion Levy. Then, Yes, sir. लिख लिया आपने, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ये सिस्टम कोलमैन एंड आलमंड एंड कोलमैन ने अपने किताब में डेवलप किया था. क्यों डेवलप किया था? क्योंकि डेफिशिएंसी आ गई थी पॉलिटिकल सिस्टम में, क्योंकि यूरोपियन मॉडल पे बेस्ड था. राइट? Yes, sir. इसको पहले सोशल एंथ्रोपोलॉजी में यूज किया गया था. रेडिक्लिफ ब्राउन ने यूज किया, बी मालिनोव्स्की ने यूज किया, सोशियोलॉजी में टेल पर्सन रॉबर्ट मॉर्टन ने यूज किया. राइट? Yes, sir. एनी कंफ्यूजन? No. ओके. नाउ आप लिखिए, it this approach says that, लिखिए, this approach says that पहला, all political system has particular set of structure. ये लिखिए, all political system has particular set of structure like legislature, executive, and judiciary. All political system has a particular set of structure like legislature, executive, and judiciary. Yes, sir. And these, second, these structure perform certain functions like legislature makes law, executive implement the law, and judiciary adjudicate the law.
all political system have particular set of function, a set of a structure like legislature, executive, and judiciary, and all political structure, all political structure perform certain functions. जैसे पार्लियामेंट लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी क्या करता है, लॉ को एडजुडिकेट करता है, उसको एक्सप्लेन करता है. वेरी गुड. कोई समझने की कोई जरूरत है नहीं, समझ में आ रहा है ना? हाँ, कोई समझ है नहीं, बिल्कुल हलवा है. अब ये लिखिए कि ऑल पॉलिटिकल सिस्टम हैज थ्री प्रॉपर्टीज. पहला कॉम्प्रिहेंसिवनेस, हर पॉलिटिकल सिस्टम कॉम्प्रिहेंसिव होता है. सो ऑल पॉलिटिकल सिस्टम हैज थ्री प्रॉपर्टीज. कॉम्प्रिहेंसिवनेस, पहला कॉम्प्रिहेंसिवनेस. Yes, sir. It means, लिखिए, it means all set of formal and informal interactions like parliament, political parties, bureaucracy, mobs, street demonstration, और बहुत जा सकता है. कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम कॉम्प्रिहेंसिव होता है. पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या होता है आप सोचिए. प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी, ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट, जुडिशरी, राइट. तो हर पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव होता है. पॉलिटिकल सिस्टम कॉम्प्रिहेंसिव होता है, राइट. मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल और जा सकता है जितना आप लिखें. ओके, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, राइट. अच्छा, दूसरा है कि हर पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरडिपेंडेंस होता है. इंटरडिपेंडेंस मींस कि एक चेंजेस इन वन सबसेट of interaction may lead to changes in the other. For instance, electoral reform of any country affect in the feature or nature of the political party. मान लीजिए, ये लिख लीजिए, उसके बाद मैं और एग्जांपल समझाता हूँ कितना क्या है इंटरडिपेंडेंस का मतलब. कॉम्प्रिहेंसिव, इंटरडिपेंडेंस, changes in one subset of interaction may lead to changes in other. For example, electoral reform of any country may change the nature and feature of political parties. समझ में आया? कि मान लीजिए कि कहीं पे मान लीजिए कोई मॉब है और मॉब वायलेंट हो गया, राइट. वायलेंट हो गया मतलब जब वायलेंट हो गया तो आप देखेंगे जब ही एक मॉब है, एक मॉब भी एक सिस्टम है, राइट. और मॉब अगर बिल्कुल भड़क गया, वो बिल्कुल वायलेंट हो गया, तो वो दूसरे पे भी इफेक्ट डालता है, राइट. पॉलिटिकल पार्टी पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग आ जाते हैं वहां पर, पुलिस आ जाती है. तो पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरडिपेंडेंस होता है, राइट. जितने भी सिस्टम है, एक पॉलिटिकल पार्टी भी एक सिस्टम है, पार्लियामेंट भी एक सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी भी एक सिस्टम है. तो एक सिस्टम में बदलाव आने से दूसरा सिस्टम में भी प्रभाव पड़ता है. इसका मतलब ये है, राइट. ओके. एंड थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ बाउंड्रीज. थर्ड लिखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ बाउंड्रीज. एग्जिस्टेंस ऑफ बाउंड्री मतलब है, इतना मत लिखिए, मैं लिखाता हूँ. पहले लिख लीजिए एग्जिस्टेंस ऑफ बाउंड्री, फिर मैं लिखाता हूँ. लिखिए, there is boundaries of social system and political system.
there is a boundaries of social system and political system, where the boundary of social system ends, political system starts. Political system starts. राइट इसके एग्जाम्पल क्या होगा? मान लीजिए एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कि हमने जगरात्रा करवाया एक दिन रात में, ठीक है, हमने भगवती का जगरात्रा करवाया और हम भजन कर रहे हैं. दिस इज सोशल सिस्टम. वी हैव बिलीव इन गॉड एंड आई एम डूइंग द प्रे, राइट. हम पूरी रात जगरात्रा कर रहे हैं, बट जगरात्रा में क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और यहाँ पर मार पिटाई हो जाती है, राइट. जब मार पिटाई हो जाती है तो ये पॉलिटिकल सिस्टम में बदल जाता है. जब तक ये मार पिटाई नहीं होती है, जब तक हम भजन सुनते रहते हैं, एंजॉय करते हैं, जगरात्रा खत्म हो जाती है, यानी ये सोशल सिस्टम के अंदर रहता है. बट जब जिस दिन वो मार पिटाई हो जाती है, कॉम्युनल वायलेंस में बदल जाता है, वो पॉलिटिकल सिस्टम में बदल जाता है. जब भी वायलेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल फैमिली इज अ सोशल सिस्टम, राइट. और जब फैमिली में कुटाई मतलब आपको झगड़ा हो जाती है मान लीजिए, और वो झगड़ा बाहर चला जाता है, राइट. मान लीजिए चाहे वो फीमेल को शिकायत हो या मेल को शिकायत हो, वो लेकर के बाहर चला जाता है कि हमारा पति मुझे पीटता है, तब वो पॉलिटिकल हो जाता है. व्हाट द आइडिया? तो सोशल सिस्टम का जहां पर बाउंड्री खत्म होता है, पॉलिटिकल सिस्टम वहां से शुरू होता है, राइट. और ये हर पॉलिटिकल सिस्टम का ये प्रॉपर्टीज है, राइट. हाँ, आइडिया आया, समझ में आया थोड़ा? यस सर. हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना यस. कि कैसे पॉलिटिकल सिस्टम सोशल सिस्टम में अंतर है. यस. कि जब तक हम मान लीजिए बाजार में हैं और घूम रहे हैं और सब्जी खरीद रहे हैं और पता चला कि मार पिटाई हो गया, हाँ, वायलेंस भड़क गया, हाँ, तो जब तक वायलेंस नहीं होता तो मार्केट इज ऑल्सो सोशल सिस्टम, राइट. बट जब यू वायलेंस ब्रेक आउट हो जाता है तो वो पॉलिटिकल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप, राइट. सो जहां पर सोशल सिस्टम अंतर खत्म होता है, वहां से पॉलिटिकल सिस्टम की शुरुआत होती है, राइट. ओके. अब आलमंड कहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. लिखिए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स. Characteristics of political system. 4 characteristics of political system. All political system have political structure. All political system have political structure. ये मत लिखिए, ये समझाने के लिए लिखा था, मुझे लगा पीपीटी आप पढ़ेंगे. All political system have political structure. Yes, sir. All political system perform same kind of functions. बस इतना ही लिखिए, ये मत नहीं लिखना है. All political system perform same kind of functions. ऊपर बताया मैंने, जैसे कोई भी कहीं का भी पॉलिटिकल सिस्टम है, अगर वो लेजिस्लेचर होगा तो वो लॉ ही बनाएगा, जुडिशरी होगा तो वो एडजुडिकेट ही करेगा. फाइन. Yes, sir. And all political system is multifunctional. तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है.
Yes, sir. And all political system are mixed system in cultural sense. All political system are mixed system in cultural sense. Done? Yes, sir. अब देखिए, हम इतने देर ना हम पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं. ये जो ऑलमैन है, ये पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो ऊपर के जो मैंने दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखाए थे ना यहाँ पे, ऑल पॉलिटिकल सिस्टम हैज सेट ऑफ स्ट्रक्चर, Yes, sir. वो यहीं पे आ जाएगा, फोर कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आ जाएगा. यहाँ पर भी मैंने वही लिखाया है ना. हाँ, तो उस दोनों को आप काट सकते हैं, उस दोनों को हटा सकते हैं लिखते वक्त. देखिए चौथा. सो यहाँ पर ये कहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम का तीन प्रॉपर्टीज होता है. एक होता है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, मतलब कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है वो इतना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है कि इवन पता लगाना मुश्किल है, राइट? फॉर एग्जाम्पल दिया है कि पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टी, ब्यूरोक्रेसी, मॉब, सिविल सोसाइटी, कास्ट ग्रुप. हाँ, कास्ट में भी बहुत सारे कास्ट ग्रुप है. हाँ, ट्राइबल्स, फॉर एग्जाम्पल अपने देश की बात करते हैं. हाँ, कहीं पे स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं पे स्टूडेंट मूवमेंट हो रहा है, कहीं पे फार्मर्स मूवमेंट हो रहा है. ऑल पॉलिटिकल सिस्टम इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. ओके. Yes, sir. दूसरा है इंटरडिपेंडेंस, कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम में अगर एक सब सिस्टम में कोई चेंजेस आता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे सिस्टम पर भी पड़ता है, राइट? और हर पॉलिटिकल सिस्टम में एक बाउंड्री होती है सोशल सिस्टम एंड पॉलिटिकल सिस्टम के बीच में. जहां पर सोशल सिस्टम खत्म होता है वहां से पॉलिटिकल सिस्टम शुरू होता है, Yes, sir. राइट? Yes, ओके. sir. अब आइए इनकी इनपुट और आउटपुट में. मैंने बताया कि वही डेविड स्टर्न के पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे ये. अब ये कहते हैं कि भैया चार तरह के इनपुट होते हैं, तीन तरह के आउटपुट होते हैं. लिखिए, Ullman and Coleman followed Eastern model of input, output and feedback. Ullman and Coleman, पूरा नाम लिखना है, पूरा नाम लिखिए. ग्रैबल ए Ullman and James S. Coleman, याद रहेगा. Followed David Eastern model of input, output and feedback. Yes, sir. He explained four inputs, three outputs, Yes, sir. and Yes, sir. okay. So four inputs are, देखिए, four inputs are Yes, sir. four inputs are, पहला लिखिए, political socialization and recruitment. Political socialization and recruitment. Yes. दूसरा है, यस, दूसरा है interest articulation. Interest articulation. Yes, sir. तीसरा है interest aggregation. Interest aggregation. और चौथा है political communication. Yes, sir. Political communication. Fine? Yes, sir. तो और तीन आउटपुट यहीं पे लिख लीजिए. थ्री आउटपुट्स आर, rule making, rule application and rule adjudication.
डन? समझ में आया ये? चलिए इसके लिए हम एक पिक्चर बना लेते हैं। ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, यहाँ पे हमें इनपुट लिखना है। इनपुट हमारा क्या है? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट हमारा है, हाँ, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। इंटरेस्ट एग्रीगेशन और क्या है? पॉलिटिकल कम्युनिकेशन ना? यस सर। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। अब ये पॉलिटिकल यहाँ से जाएगा, ये यहाँ पे मैंने पॉलिटिकल सिस्टम डाला है, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल सिस्टम है। अब ये आउटपुट में क्या आएगा? रूल मेकिंग। हाँ, ये इनपुट है, ये आउटपुट आएगा। यस, रूल मेकिंग और रूल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, रूल एडजुडिकेशन। हाँ, रूल एडजुडिकेशन, ये ऐसे काम करेगा, राइट? यहां तक कोई कंफ्यूजन? नहीं। अच्छा, अब आइए हम समझते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होता है। आपने सोशलाइजेशन वर्ड सुना है? यस। क्या होता है सोशलाइजेशन? सोशलाइजेशन ये होता है कि अगर लड़की जन्म होती है तो पिंक कलर का कपड़े पहनाए जाते हैं, और जो बेटा जन्म होता है तो उसको ब्लू कलर का शर्ट पहनाया जाता है, राइट? सोशलाइजेशन ये होता है कि लड़कियों को बचपन में ही चूड़ियां पहना दी जाती है और लड़के को नहीं पहनाई जाती है। सोशलाइजेशन ये होता है कि लड़कियों को बचपन में ही नाक और कान छेद दी जाती है और लड़कों को नहीं छेदी जाती है। लड़के को सोशलाइजेशन ये होता है कि लड़की को बचपन से ही बोला जाता है ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, और लड़के को कुछ नहीं बोला जाता है। सोशलाइजेशन ये होता है, राइट, कि अगर कोई गेस्ट आए तो आपको पिताजी बताएं कि क्या करना है, प्रणाम कैसे करना है, किसको प्रणाम करना है और किसको छोड़ देना है, राइट? Yes, sir. Are you getting my point? Yes. Yes. So if you are getting my point, then you will get it. Nice idea. Political socialization means, it is a way in which political value are formed. तो हम तो वो सोशल वैल्यू की बात कर रहे थे। Political socialization means, कि the way in which the political values are formed and political culture is transmitted from one generation to another generation, right? And the most of children acquire their political values and behavior patterns by adolescence, and some of these attitudes will evolve and change throughout their life, right? Yes, And sir. other attitude may remain part of their political self throughout the life. It is a process of induction into political culture, right? And it is an end product, is a set of attitude, cognition, value, standards, feeling towards the political system, its various roles and role incumbents. Political socialization means whatever political value you have towards the political system. For example, if you are right conscious or not. आप ट्रेन में जा रही हैं और टीटी आ गया, ठीक है? और टीटी ने कहा कि हम आपको निक उतार देंगे, राइट? इट डिपेंड्स ऑन योर पॉलिटिकल वैल्यू कि आप उसको कैसे, आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस, आप उसको काउंटर कैसे करेंगे। आप उतर जाएंगी या आप नहीं उतरेंगे। हाउ विल यू बिहेव डिपेंड्स ऑन योर सोशलाइजेशन, एनीवन सोशलाइजेशन। आपने देखा था कि एक लड़की जब रांची जा रही थी
तो उसको मुगल सराय स्टेशन पे उतारा जा रहा था, क्योंकि पूरी ट्रेन खाली हो गई थी। और उस लड़की ने कहा कि मुझे यहाँ नहीं उतरना है, मेरी टिकट रांची तक है और मुझे रांची पहुंचाया जाए, राइट। और सबको मजबूर होकर वो पूरा ट्रेन रांची ले जाना पड़ा ड्राइवर को। डू यू नो दिस फैक्ट? यू डोंट नो? यस, दिस इज ट्रू। एक लड़की थी, अभी एक फिलहाल 5-6 महीने की बात है कि मुगल सराय में आते आती वो ट्रेन खत्म, मतलब ये हो गई, पूरी खाली हो गई। अब वो लड़की अकेली बची। अब बोला कि आप यहाँ पे उतर के दूसरी ट्रेन ले लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी टिकट तो रांची तक है, आप यहाँ पर कैसे उतार सकते हैं मुझे मुझे इसी ट्रेन से जाना है। तो वो ड्राइवर और जो भी मैनेजमेंट थे उनको रांची तक ले गए, राइट। So it also apply to your politics. When your political party or political government gives certain judgment, how do you react, right? कोई भी political कोई decision आता है, how do you react? Not only do you means how the people react, basically. Yeah. Right? How do I react? Right? What are my political value? What is my cognitions? स्टैंडर्ड क्या है, कैसे मैं फील करता हूँ पॉलिटिकल सिस्टम पे, ये मैं अधिकार है। और ज्यादा जब पॉलिटिकल कल्चर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन मीन्स द बिलीव, वैल्यू, फेथ you have on your political system. Okay? Got the idea? Yes. Okay. So political recruitment and political socialization. अब इसको आप लिखना है तो लिख लीजिए। Political socialization refers to the way in which political value are formed and political culture is transmitted from one generation to the next. इतना ही लिखिए, ज्यादा मत लिखिए, इतना लिखने की जरूरत नहीं। लिखिए, इसके आगे लिखिए, it is a set of attitude, it is a set of attitudes like cognition, value standard, and feeling towards political system. Political system refers to the way in which political values are formed and political culture is transmitted from one generation to the next one. It is a set of attitudes like cognition, value, standards, and feeling towards political system. Done? हो गया? खत्म? Okay. Interest articulation. लिखिए, second, interest articulation. देखिए, every political system has some way of interest articulating interest, claims, and demands for political action. Every political system has some way of articulating interest, claims, and demands for political actions. इतना ही लिखिए और उसके बाद लिखिए, मैं लिखाता हूँ। Among four inputs, interest articulation is most important.
Interest articulation is most important. It is articulated by media group, pressure and interest group, government, sometimes government भी interest articulate करता है, civil society group, etc. ये लोग इंटरेस्ट आर्टिकुलेट करते हैं बेसिकली. अब लिखिए फंक्शन ऑफ एग्रीगेशन, यानी कि इंटरेस्ट एग्रीगेशन या फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट एग्रीगेशन. अब क्या है कि एग्रीगेशन लिखिए, इसमें यहां से लिखिए, एग्रीगेशन मीन्स फॉर्मुलेशन ऑफ जनरल पॉलिसीज इन विच डाइवर्स इंटरेस्ट आर कंबाइंड, accommodated, otherwise taken account of, or by means of recruitment of political personnel, more or less commented to particular pattern of policy. देखिए, aggregation means formulation of general policy. Aggregation means formulation of general policies in which diverse interests are combined, accommodated, or otherwise taken account of इतना मत लिखिए, particular policy, taken account of particular pattern of policy, इतना लिखिए. Done. Okay. हो गया. Now the fourth is political communication function. अब वही है, मीडिया के पास पहुंचाना है. अब political communication लिखिए. All kind of function performed in the political system, political socialization, recruitment, interest articulation, interest aggregation, right, rule making, rule application, rule adjudication are performed by the means of communication. Media play a vital role in political communication, like newspaper, TV serial, cinema, internet, magazines, drama, poem, prose, ये सब political communication का एक means है. लिख लीजिए. Done. पूरा लिखना है ना सर? हाँ, पूरा समझ में आया ना? अपने मन से लिख लीजिए कि all kind of political all kind of functions in the political system, like socialization, recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, application and adjudication performed by the means of communication, like media play. लिख लीजिए पूरा, अच्छा रहेगा. जब आप दोबारा देखेंगे ना तो याद रहेगा. Done, sir. Okay. Now the output. 3 output लिखिए. 3 output. अब जब इंटरेस्ट आर्टिकुलेट हो चुका है, पॉलिसी बन चुका है, राइट, मतलब एक पॉलिटिकल सिस्टम में अब क्या होता है, रूल मेकिंग होता है,
रूल एप्लीकेशन होता है एंड रूल एडजुडिकेशन होता है, राइट? एंड इट इज इक्विवेलेंट टू legislative functions, executive functions and judiciary functions. कुछ नहीं है इसमें, हाँ? And the functions is fostered on the basis of nature of political system, like democracy है या authoritarian government है या totalitarian government है या military dictatorship है, इस पे डिपेंड करता है। इसको लिख लीजिए। Rule making, rule application and rule adjudication are functions of the government, equivalent to legislative function, executive function and judiciary function. The function is depends on the nature of political system. The function is based on nature of political system such as democracy, authoritarian, totalitarian or military dictatorship. Done. करिए आराम से आराम से। Yes sir. Done? Yes sir. अच्छा, मुझे आपने कर लिया तो मुझे समझा, मतलब समझ में आ गया। Yes sir. वही इनपुट आउटपुट फंक्शन है, वही डेविड स्टर्न की बात है। हाँ बोलिए। जैसे रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, रूल एडजुडिकेशन, ये 3 आउटपुट होते हैं जो कि गवर्नमेंट के एक तरह से फंक्शन है, और उनके जो फंक्शन होते हैं उनके इक्विवेलेंट है, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये जो काम रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन और रूल एडजुडिकेशन में होता है। राइट। समझ में आ गया ये अप्रोच? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो। अच्छा, बोरिंग? नो सर, नो इंटरेस्टिंग। नॉट एट ऑल। बोरिंग नहीं था? अच्छा, थर्ड है पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच। इसमें हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच में हम 3 लोगों को पढ़ेंगे। हम लुशियन पाई को पढ़ेंगे, लुशियन डब्ल्यू पाई, सैमुअल पी हंटिंगटन एंड एफ.डब्ल्यू. रिक्स। यस सर। अब लिख दीजिए लुशियन डब्ल्यू पाई, LUCIAN, लुशियन डब्ल्यू पाई। इन्होंने डेवलपमेंट सिंड्रोम का कॉन्सेप्ट दिया था। डेवलपमेंट सिंड्रोम का। सो व्हाट इज डेवलपमेंट सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का तो अर्थ आप समझते होंगे, सिंड्रोम का क्या मतलब होता है? डिसऑर्डर। हाँ, सिंपल मतलब होता है डिसऑर्डर। ये इंटेलेक्चुअल लोग हैं ना, बड़े बड़े जार्गन यूज करते हैं, राइट? है कुछ नहीं, बस डेवलपमेंट सिंड्रोम मतलब देखिए, लुशियन डब्ल्यू पाई आपने लिख दिया, लुशियन डब्ल्यू पाई। यस सर। डेवलपमेंट सिंड्रोम। ओके, देखिए, he has given the concept and parameter of political development. He has given the concept and parameter of development. One can compare different countries on the basis of political development.
one can compare different countries on the basis of political development. Yes, sir. Pi मतलब Lucian Pi. Yes, sir. Lucian Pi thought political development in terms of cultural diffusion, लिख लीजिए, एज इट इज लिख लीजिए, फिर समझाता हूँ, पहले लिख लीजिए. Pi thought political development in terms of political diffusion and Yes, sir. of adapting, fusing and adjusting old pattern of life to new one. Yes, sir. He said that all society has go towards, he said that all society has to go towards evolution of nation state. Yes, sir. Political development is prerequisite. Political development is prerequisite for all kinds of development like economic, legal, modernization. Political development is prerequisite for all kinds of development like economic, legal, modernization, mobilization and participation, democracy, and engaging in international affairs. Yes, sir. Pi identified three characteristics of political development. Equality, second capacity, and third differentiation. Right? Yes, yes, sir. Done. लिख लिया आपने? Yes, Pi sir. identified three characteristics of political development. First, equality, second, capacity, and third, differentiation. Lucian Pi, the Lucian W. Pi said that political development facing following crises. Lucian Pi said that political development facing following crises. Identity crisis, पहला. दूसरा, legitimacy crisis. तीसरा, penetration crisis. चौथा, participation crisis. पांचवा, integration crisis. And छठा, distribution crisis. हो जाए तो बताइएगा. Done, sir. डन. आपके अब ये आई है समझाने की बारी. आपको ये थोड़ा सा समझ में आया? थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा या नहीं समझ में आया? Heavy word है. हाँ, जार्गन से मतलब थोड़ा सा रटने वाला चीज है यहाँ पर मटेरियल ये, लेकिन मैं समझाता हूँ. देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट दिया, इतना समझ में आया? Yes, sir. लुशियन पाई ने क्या दिया कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट का?
राइट। और वो कहा कि किसी भी कंट्री का जो हम कंपेयर कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राइट। एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन। कल्चरल डिफ्यूजन क्या होता है कि मान लीजिए कोई गांव से आया, गांव से आया, गांव से वो बहुत सारे आइडेंटिटी कैरी करके शहर में आता है, राइट। वो अपना कास्ट, अपना जेंडर, अपना रीजन, अपना लैंग्वेज, ये सारे आइडेंटिटी होते हैं उसके, ये कल्चरल होता है। अगर उसको डेवलपमेंट कब कहा जाएगा, जब वो अपना जो कल्चरल डिफ्यूजन करेगा, यानी कि अपनी जो वो कल्चरल आइडेंटिटी है गांव वाली, उसको धीरे 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 छोड़ेगा, दूसरे लोगों के साथ मिलेगा, राइट। अब नहीं तो वो अगर मान लीजिए कि वो पंडित है, बोलेगा मैं पंडित हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं पंडित से ही मिलूंगा, मैं पंडित के यहाँ खाऊंगा, मैं पंडित से ही बोलूंगा, मैं पंडित से ही पढ़ूंगा, मैं पंडित के यहाँ जाऊंगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगा वो प्रॉब्लम। It won't be called a political development for that person. Political development कब होगा, जब वो कल्चरली डिफ्यूज करेगा अपने आप को, राइट। यस सर। और न्यू कंडीशन में अडॉप्ट करेगा, राइट। यस सर। न्यू कंडीशन में अडॉप्ट भी करेगा, एडजस्ट भी करेगा, और जो न्यू कल्चर है उसके साथ मिलेगा भी, राइट। यस सर। अब पढ़िए इसको, इस लाइन को कि political development in terms of cultural diffusion and of adapting, fusing and adjusting old pattern of life to the new one. समझ में आया? Yes sir. Political developments, in terms of cultural diffusion, adapting, adjusting and adhering, fusing with the new cultural, right? Living out the old pattern, right? और उन्होंने कहा कि कोई भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है तो उसको नेशन स्टेट होना पड़ेगा, बिकॉज नेशन स्टेट इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड इंस्टीट्यूशन। मान लीजिए कोई सोसाइटी है, वो कहती है कि मैं नेशन स्टेट बनाऊंगी नहीं, तो ये कहता है कि नहीं, नेशन स्टेट बड़ा ही एक्चुअली न्यू इवोल्यूशन है, राइट? यस सर। तो उस पे जाना पड़ेगा। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट करने के लिए ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आप पॉलिटिकली डेवलप नहीं होंगे तब तक आप कल्चरली डेवलप, इकोनॉमिकली डेवलप नहीं होंगे, आप लीगल रूप से डेवलप नहीं होंगे, आप मॉडर्नाइज नहीं होंगे, आप लोगों के इशू पे मोबिलाइज नहीं होंगे, आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, राइट? सो पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज अ प्रीरिक्विजिट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट मतलब क्या है? डेमोक्रेसी, right? Democracy is a prerequisite for economic development. It's also prerequisite for legal development, modernization. कब होगा? जब political development होगा, जब democracy होगी, right? और तीन characteristics हैं political democracy के। एक है equality. Political development मतलब यहाँ आप democracy को भी रख सकते हैं, right? Equality. वहां पर उस सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होगा? इक्वालिटी होना चाहिए, राइट? दूसरा है कैपेसिटी। उस पॉलिटिकल सिस्टम के पास कैपेसिटी होना चाहिए कि वो अलग अलग चीज प्रोड्यूस करे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, मोबिलाइजेशन, पार्टिसिपेशन, ये सारे चीज को प्रमोट करे, राइट? एंड थर्ड इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ कि अगर महिला है तो उसको ज्यादा प्रमोट करे, जो ज्यादा बैकवर्ड है उसको और ज्यादा प्रमोट करे, राइट? इक्विटी, हैव यू हर्ड ऑफ द वर्ड इक्विटी? यस सर। इक्विटी इज अ वन काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट? सो हियर इक्वालिटी एंड इक्विटी बोथ, इक्वालिटी भी चाहिए और इक्विटी भी चाहिए, और स्टेट के पास कैपेसिटी भी होना चाहिए कि वो प्रोड्यूस कर सके, नहीं तो वो नहीं कर सकता, राइट? सो समझने वाली है, तो रटने वाली भी है, समझने वाली भी है। एंड लुशन पाई ने कहा कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है यानी डेमोक्रेसी है, ये इतने तरह की क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस है इनके पास लेजिटिमेसी क्राइसिस है। मान लीजिए डेमोक्रेसी को अगर पाकिस्तान में क्यों सक्सेस नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वहां लेजिटिमेसी क्राइसिस है,
या कोई मान लीजिए भूटान में सक्सेस नहीं हुआ, क्यों सक्सेस नहीं होगा? क्योंकि वहां पर जो किंग है वहां का, उसके पास बहुत बड़ा लेजिटिमेसी है, राइट? किसी अंडर डेवलप्ड एरिया में डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वहां जो राजा है उसको बहुत ज्यादा लेजिटिमेसी है। तो वहां पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेजिटिमेसी क्राइसिस फेस करना पड़ेगा। पेनेट्रेशन क्राइसिस होता है कि एक स्टार्टा को आपने पेनेट्रेट कर लिया, दूसरे स्टार्टा को पेनेट्रेट नहीं कर पा रहे, तीसरे को नहीं कर पा रहे, क्योंकि कोई भी सोसाइटी में एक स्ट्रैटिफिकेशन होता है। जैसे इंडियन सोसाइटी है, यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन है, कास्ट एक स्ट्रैटिफिकेशन है, राइट? एक जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन है। तो एक कम्युनिटी को आप समझा लीजिए, दूसरे कम्युनिटी को भी समझाना है, तीसरे कम्युनिटी को भी समझाना है, चौथे कम्युनिटी को सब भी समझाना है, यानी कि थ्रू आउट आपको सोसाइटी में सबके यहाँ पेनेट्रेट करना है। बट ये क्राइसिस होती है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बाद। देन पार्टिसिपेशन क्राइसिस है, देन इंटीग्रेशन क्राइसिस है। कोई भी जो कंट्री है वो अपने आप में टूटना चाहता है, हाँ, उनको वो कहता है मैं अलग हो जाऊंगा, वो कहता है मैं अलग हो जाऊंगा, और सब ये समझता है कि मैं डिसइंटीग्रेट होकर खुश रहूंगा, राइट? सो वहां इंटीग्रेशन क्राइसिस है वहां पर, राइट? और एक डिस्ट्रीब्यूशन क्राइसिस है। गॉट द आइडिया? सो ये लुशन पाई था। अब क्या है कि देखिए, ठीक है, डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट निगेटिव में हो तो भी तो डेवलपमेंट है, नहीं? नेगेटिव में क्या मतलब? मान लीजिए कि हम एक 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 गांव का लड़का है, एक एग्जांपल मैंने गांव से लड़का, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को मैंने समझाया कि विलेज बॉय, डोंट टेक इट एज पर्सनली, और विलेज बॉय है, राइट? ये विलेज बॉय है, ये सिटी में आया है। अब इसका डेवलपमेंट होगा, हो सकता है डेवलपमेंट नेगेटिव सेंस में हो, ये नहीं, ये और ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाए, इसका पॉलिटिकल डेवलपमेंट ना हो करके पॉलिटिकल डीके हो। क्या हो? डीके हो, कि जो इंसान गांव में था वो भी इंसान ना रहे, यहाँ शहर में आके और ज्यादा बड़ा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो क्या होता है कि डेवलपमेंट नेगेटिव भी होता है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है कि जब हम आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, राइट? साइंटिफिक टेम्पर की बात सोचते हैं, हम सिटीजन की बात सोचते हैं, तो ये डेवलपमेंट है। और नेगेटिव क्या होता है? जब हम साइंटिफिक टेम्पर को छोड़ करके हम बोलने लगते हैं कि बत्तख से ऑक्सीजन निकलता है, राइट? हम बोलने ये लग जाते हैं कि गणेश के टाइम पे भी बहुत बड़ा सर्जन था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो पॉलिटिकल, ये भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, बट दिस इज अ नेगेटिव डेवलपमेंट, दिस इज कॉल्ड डीके, पॉलिटिकल डीके। व्हाट वी कॉल पॉलिटिकल डीके? डीके, yes. So the concept of political decay was given by Samuel P. Huntington. और मुझे लगता है आपको आज बहुत ज्यादा हो गया है, आवाज से लग रहा है, हाँ? राइट? एक्चुअली सर ये चीजें वैसे इजी होती है पढ़ने, जैसे आप बोलते हैं कि इजी टू डाइजेस्ट होती है, लेकिन ये इतना ज्यादा पढ़ लो ना तो फिर दिमाग में हॉटस्पॉट हो जाता है। राइट, हाँ, ऐसा पढ़ते वक्त तो लगता है हाँ सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। राइट। सो आपने ये इसको तो लिख लिया ना, इसको यहीं तक रहने देते हैं, आगे कल करेंगे। डीके कुछ नहीं है, डीके इतना ही है, हाँ, डीके कुछ नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है? पॉलिटिकल डीके सैमुअल पी हंटिंगटन का, और फिर डब्ल्यू रिग्स का है, वो कल बताओ। फिर मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है, फिर है कल्चरल अप्रोच, राइट? ठीक है, कल करेंगे, राइट? Yes. So see you tomorrow then. I'll send you this PPT, okay? Okay. Bye sir, thank you. Bye.
Most welcome.